हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 लुईस पास्चर कॉन्करर ऑफ डिसीज विच इज़ रिटन बाय E.H. Carter who is an American writer and he is a famous biochemist. So this is taken from the source Pioneers of the Modern World. So here on the field of battle in one of the campaign means military series, Napoleon decorated for bravery a certain tanner named Pasteur. तो एक बैटल फील्ड में कैंपियन होता है, उस वहाँ पर एक आदमी होता है, हिज नेम इज़ पास्चर. तो उसको क्या है, ब्रेवरी का अवार्ड मिलता है. सर्टन टैनर मीन्स एनिमल स्किन, दे मेक एनिमल स्किन इनटू लेदर. तो एनिमल की स्किन से वो क्या बनाते हैं, लेदर बनाते हैं. दिस ब्रेव सोल्जर हैड एन इक्वली ब्रेव सन. जैसे ये बहुत ही ब्रेव था पास्चर, ऐसे ही उसका एक बेटा था, ब्रेव सन, लुईस पास्चर. सो हिज नेम इज़ लुईस पास्चर. हिज फादर इज़ कॉल्ड एज पास्चर. हिज नेम वॉज डिफरेंट but his son name is Louis Pasteur. Born 7 years after Waterloo. Waterloo is a place and also there war was fought. So he was born after 7 years of this Waterloo. He was not a soldier but he was a fighter. But as his father Pasteur, he was not a soldier but he was a fighter. How he was a fighter? Here now. He fought disease. He devoted his life to the study of what we sometimes call germs. So already we know what is germs. तो हमें पता है कि germs क्या हैं. He fought disease. He devoted his life to the study of what we sometimes call germs. तो उसने पूरी लाइफ किसके बारे में स्टडी की, जर्म्स के बारे में. विच men of science call bacteria. जो साइंस के जो मास्टर्स होते हैं, दे कॉल जर्म्स एज बैक्टीरिया. सो इन इंग्लिश एज वी कॉल जर्म्स एंड बैक्टीरिया लाइक दैट. इन ग्रीक वर्ड बैक्टीरिया मीन्स लिटिल रॉड. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोला जाता है, लिटिल रॉड. बैक्टीरिया आर वेजिटेबल ऑर्गेनिजम्स. वेजिटेबल ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट प्लांट्स. लिटिल रॉड शेप्ड plants which exist in the air. So here what they are telling, वो क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया क्या है, वेजिटेबल ऑर्गेनिजम्स है, नथिंग बट प्लांट्स. लिटिल रॉड शेप्स प्लांट्स विच एग्जिस्ट इन द एयर. तो ये कहाँ होते हैं, हवा में पानी और सॉइल. एयर, वाटर एंड सॉइल. एंड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स. सो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, in the bodies of animal and plants. Some but not all are the causes of disease. सारे बैक्टीरिया डिसीज़ के नहीं होते. Some convert matter into food for plants. A few bacteria convert matter into food. Many examples we can take like curd. Curd को हम बनाते हैं बैक्टीरिया से ही. It is a type of converting bacteria are present in curd. So Louis Pasteur had very busy and interesting life. So always Louis Pasteur busy रहते थे. Why? Because he had interesting life. How interesting he had his life? He not only made some exciting discoveries about germs but he was able to use his discoveries in very practical way. जो उसने डिस्कवर किया था अपनी लाइफ में, सो वो अबाउट जर्म्स के बारे में उन जिसने डिस्कवर किया था, तो उसको प्रैक्टिकल वेज में भी उसको क्या है, एक्सपेरिमेंट करना बहुत मज़ा आता था. ही वर्कड हार्ड इन हिज लेबोरेटरी. तो वह हमेशा अपनी लेबोरेटरी में हार्ड वर्क करता था. विथ टेस्ट ट्यूब्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. How he is doing hard work in the laboratory with test tubes and all kind of experiments. But nearly all the time he was working to help people who were suffering in some special way from diseases. So his intention to help some
स्पेशल इन सम स्पेशल वे, मतलब उनको स्पेशल वे में जो सफ़र हो रहे हैं लाइक डिसीज से और एनी अदर प्रॉब्लम, ही वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. अमॉन्ग द पीपल whom pastor was able to help were, सो जो लोगों को हेल्प करना चाहता था उनमें कौन कौन लोग थे? ब्रीवर्स. ब्रीवर्स मीन्स बियर मेकर्स, जो बियर या फिर वाइन बनाते थे उनको हेल्प करता था. देन ब्रीडर्स, जो शेफर ब्रीडर्स यानी जो